Hello everybody. Sorry for the delay. There was some problem with the Hangout, YouTube Hangout, and we are about to start. Yes, right now. So let me share my screen. There we go. So we have questions, and let's start with the questions. We will also हम start करेंगे पहले 10 questions, right? If you tell me which first 10 questions, Alicia need question to the question 9, 1. Oh goodness, sorry question. Question number 5, 7 and 10. Let me first solve these three questions. Alicia ने सबसे पहले message किया था. We go to, you can see the questions here. Question number 5. Here's question number 5. Says that in the diagram below, S1 and S2 are two continuous harmonic sound sources that emit sounds of identical frequency. The distances S1x is equal to S2x, and an instrument that detects sound intensity is moved along line AB. So you can see this line AB. Now there are two sources, S1 and S2. On the axis below, sketch a graph to show how the intensity of the sound varies with distance along AB. Mark the position of X on your graph. So what we do, let me pick this part of the picture. Here we go. I picked this picture from here. So the color session first, close it first. So give me a second. And don't worry, I will revise the concepts that you asked. That you asked in the session. I will revise those concepts as well. So here's the diagram. Okay. So now the question was how the graph will be drawn. We have the graph as well, and let me copy the graph. And there we go. So here's the graph. This was the question. Question A, intensity, how the intensity varies. Now, when it is not mentioned that the sources are out phase, that means they are in phase. As you know, the variation of intensity will be somehow like this, that there will be maximum intensity at the center, there is zero intensity here, and then the intensity will increase to the maximum. It should increase like this, because in interference,
the intensity of all constructive areas will remain same, whether it's light or it's dark. So probably like this. I mean, this height. Anyway, now we pick this part only, this part, and we draw it on the graph. So if you see, here is x. So you are starting from x. So think you are turning this area by 90 degrees to plot it on the graph. So x will be here, and now the intensity is maximum here. We continue, goes to 0, and then goes to maximum. Be very careful that the heights would be same. Heights will not change, and like this. So that is the graph. Then we move to the next part. Next part of this question is explain what is meant by the principle of superposition and as applied to the waves. You know what is principle of superposition. I'm not going to repeat that definition because that is written in the notes. Okay, so the next question is question number 7. So I move to question number 7 now. मैं वापस आता हूँ मैं पहले मैं अलीशा के क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ उसके बाद जो जो क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं करता जाऊँ. So I'm just focused at the moment on first 10 questions. Question number 7 is state the difference between standing wave and traveling wave. So standing wave is a wave in which energy profile does not appear to shift, and the traveling wave is a wave in which energy profile appears to shift. Now, the next part is a cord is held under tension between two fixed points A, B. The distance AB is 40 cm. This distance is given. State the wavelength of the fundamental frequency. So if I pick this part, we know one thing. Copy it here. Here we go. Okay. थोड़ा सा इसको expand कर देते हैं. Clear. So whenever there is a stress string and there is fundamental frequency, the fundamental frequency is always formed like this. There will be nodes at the ends and there will be antinode at the center. Now in this formation, if I draw a line, this whole part is actually lambda by 2 as well. So if lambda by 2 is 40, then wavelength is 8. That is the first part. So you find the wavelength. On the diagram above, sketch the shape of the chord when it vibrates in the second harmonic. The first harmonic is the fundamental frequency. And when it comes to second harmonic, the second harmonic will be, there will be one more node at the center. And it will appear, use a different color. Okay, it will be like this. So that is the second harmonic. And remember that there are no frequencies in between. या stationary wave इस form में होगी जो हमने red से draw किया या फिर इससे अगली formation यही होगी. In between कोई और formation नहीं. Explain why it is not possible to have resonant mode of frequencies between first and second harmonics. So obviously, stationary wave on stress string is formed every time when there are nodes formed at point A and B. So to form a stationary wave on stress string, nodes are either formed at fundamental frequency or formed at second harmonic. यानी या फर्स्ट हार्मोनिक पे फॉर्मेशन होती है नोट्स पे या सेकंड हार्मोनिक पे होगी. देयर इज नो सच केस जिसमें फॉर्मेशन इस तरह से हो जाए like this is point A and this is point B, and you won't get anything like this. That is impossible. The wave has to be closed here. There will be node at this point और उसके दरमियान में कुछ नहीं हो सकता. So nodes are either formed at fundamental frequency or at first or at second harmonic or at third harmonic or at fourth. So प्रोग्रेसिव वेव हर फ्रीक्वेंसी पे प्रोड्यूस होती है. स्टेशनरी वेव स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे प्रोड्यूस होती है. फॉर अ गिवन पार्ट 5 इज फॉर नहीं पार्ट 4 हमने करना.
The speed of the wave on the string is 200 meter per second. Calculate the frequency of the second harmonic. So speed is given, and we have to find out frequency. Now, when there is second harmonic, I mean, let's focus on this blue wave. So at that time, the wavelength is actually 40. It is wavelength. I mean, from first node to third node, it is one complete wave. So wavelength is 40, speed is given, and frequency can be determined as V by L. Actually, L is the wavelength. And the last part is for a given maximum amplitude of energy of a standing wave is proportional to frequency square. So क्वेश्चन कहता है कि जी आपके पास एक रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप ये है, let me open a new canvas. The question says that, you know, uh, the relationship is given, that is energy is equal to amplitude square, sorry, proportional to amplitude square. Find out the ratios, the ratio of, sorry, frequency square, not amplitude square, it was frequency square. So energy of second harmonic divided by energy of first harmonic. So energy of second harmonic divided by fundamental frequency means frequency of second harmonic square divided by frequency of fundamental frequencies, fundamental wave of fundamental frequency. So E2 by E, इसकी ratio अगर calculate करनी हो, if you remember the ratio was, the sequence was in stretch string F naught, then 2F naught, then 3F naught, and so on. वैसे भी पिछले parts में आप frequencies calculate कर चुके हैं. So this will be 2F naught whole square divided by F naught square. ये cancel हो जाएगा. The ratio will be 4:1. That will be the ratio. Yeah, so that was question number 7. हम एक लिस्ट बना लेना, साथ साथ लिख लेंगे हमने कौन से क्वेश्चंस किए हैं. We have done in this session, we've done question number 5, we have done question number 7. Let's see what's the next question. The next question is 10 part B. Okay, so here we go. 9. There's question number 10 part B. Figure 3.1 shows a plain view of an experiment to demonstrate interference of microwaves. Now, this is first source. ये diagram भी pick कर लो. So let's paste it here. So here's the diagram, and microwaves from T reach the detector D by two routes. Some travel directly to D, means this is first source. कुछ light यहाँ से directly आ रही है, कुछ light यहाँ से आ रही है. So, I mean, we can consider that these are two sources. It says that when the detector is moved along line XY, perpendicular to the sheet of the detector, it registers a sequence of maxima and minima. Maxima is the constructive interference and minima is the destructive interference. By referring to the path difference between the two sets of waves arriving at D, explain why maxima and minima are formed. Now, there are two sources. We call it, say, source S1 and this is S2. And the path difference is actually the difference of distances of two wave sources from a particular point. अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम ये बात डिस्कस की थी कि एक्चुअली आपके पास एक डिस्टेंस D1 ये है और एक डिस्टेंस D2 ये है. And these two distances are calculated in terms of wavelength. And when you calculate these distances in terms of wavelength, then the path difference is equal to both distances. You subtract first value with the second from the second one, and you get the answers. Now, if here the path difference is, say, 0 lambda, just suppose I don't know, I didn't calculate the value. You select many points
on the way from the existing position of the detector to the aluminum sheet, here the value will be zero point 0.5, here the value will be 1.0, here the value is again say 1.5. So if the sources are in phase, the points where the path difference is 0 lambda, integral multiple of lambda, like these 2 points and this one probably, these points will observe constructive interference. So इसका आंसर ये होगा कि source T and the reflecting point, these both points are working as two independent sources of light or microwaves. Therefore, when we move from point Y to point X, the path difference changes along this line, and because the path difference is changing along the line, so where there is integral multiple of lambda, we will be getting constructive interferences, and where there is where there is decimal or lambda plus 1 by 2 or n plus 1 by 2 lambda or n minus 1 by 2 lambda, at those points there will be destructive interferences. Coming to the second part, describe and explain how the separation between the neighboring maxima and minima would change if the microwaves with the shorter wavelength are used. So there is one equation, x is equal to lambda d by a. That goes for the interference. For the interference. So अब यहाँ पर you know this distance is actually a, and suppose here is first maximum and here is second maximum. Sorry, here is second maximum. The distance between two maximum or two minimum, that is called x. Distance between two successive bright fringes or two successive dark fringes. अगर आप dark to dark लेंगे या destructive to destructive लेंगे, even then that is x. And in this case, if you draw this line, I mean both sources in line of sight, and here is the distance. This distance will be known as d. Now every point is labeled, every quantity is actually labeled on this diagram. So he says that अगर हम shorter wavelength की wave use करते हैं तो x को क्या फर्क पड़ेगा? Yeah, how the separation between neighboring maxima would change if the shorter wavelength is used. So x is directly proportional to wavelength. If rest of the things are kept constant like d and a. So if shorter wavelength is used, then what will happen actually? The distance between x will also decrease. So x की value decrease होनी शुरू हो जाएगी. I hope you get the answers. Moving to the next question. Alicia के question मैंने कर लिया. हमने question number 10 भी कर लिया. Let me rewrite that question number here. We are done with question number 5. We are done with question number 7. Now we have question number 10. So we move on. The next one. Question number 7 मैंने कर दिया है, हानिया. I hope there is question number 8. So the next question is question number 8. Let's see. Okay. Here's question number 8. The diagram below shows a string which is stretched between two supports A and B. Sketch a diagram to shape the standing wave pattern set at fundamental frequency. I think it's just the same question था जो अभी हमने किया. Let me show you. Yeah, this one. It's the same. Like अगर आप चाहते हैं वो वाला उठा लेता हूँ, वो वाली diagram उठा लेता हूँ. कोई issue नहीं है. Here's the diagram. So let me start it here. Paste it here. Something weird is going on. Oh my god.
क्लोज हो जाए एक सेकंड. So here is the picture. तो कहता है इसके ऊपर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी शो करते हैं. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज दिस वन. यू नो इसके ऊपर मेरे से ड्रॉ नहीं हो रहा, वो ऊपर वाला पार्ट छोटा है. So fundamental frequency is actually this one. There will be node on both ends, and hence you get the value. And state three independent parameters that affect the fundamental frequency. Remember that the fundamental frequency is affected by the position of plucking. It is also affected by the tension. This is P. Okay. Tension in the string. And the third factor is the mass per unit length. If you want to find frequency, you have to use this tension. You have to use mass per unit length. अगर आपको याद हो हमने एक फॉर्मूला क्लास में भी किया था, F was equal to 1/2L under root T by M. So the first factor was actually the length of the string. The second factor was tension in the string, and third one was the mass of the string. C part is by what factor can each parameter be altered independently in order that the fundamental frequency of vibration is doubled. अब independently अगर आपने check करना है तो let's see. We said that fundamental, the fundamental frequency is 1/2L under root T by M. इंडिपेंडेंटली हमने चेक करना है. पहले चेक करते हैं लेंथ से क्या फर्क पड़ता है. F is inversely proportional to L. That means F1 by F2 is equal to L2 by L1. हमने कहा था उसने in order that the fundamental frequency of vibration is doubled. यानी आपके पास अगर fundamental frequency F0 है, then double of this one is 2F0. The length is L2, which is to be determined. The initial length is L. So F0 और F0 cancel हो जाएगा. Then L2 will be equal to half L. यानी लेंथ को आप हाफ कर दें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी. ये ना भी करें तो डायरेक्टली यहाँ से नजर आ जाता है. Similarly, the second factor that you need to address is frequency is directly proportional to under root T. Similarly, F1 by F2 is equal to under root T by T1 by T2. This is F0. This is double of fundamental frequency. And here is again T1 by T2. दोनों sides का square ले लें to remove that square root, and that will be F square by 4F square, and so on and so forth. So that is the way how we solve it. Oh, somebody is asking me to send a invitation. But sir, give me a minute. There's a guy, his name is Fahad. His email is somewhere here. This is more or less. So screen share का सबसे बड़ा issue ये है कि you all will be seeing who is messaging. Not received. His email is somewhere. Okay, sorry. And okay, so why didn't you, Shansa का question था, why didn't you consider 2L in question number 8 part C? Question number 8 part C. Question Shansa ये है कि by what factor can each parameter be altered independently in order that the fundamental frequency of vibration is doubled? So मैंने आपके सामने सॉल्व किया है कि फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, 2F0 करना है, तो आपने निकाल लिया कि लेंथ will be half. So we actually knew this value and hence we determined this value.
तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने के लिए लेंथ को आपको हाफ करना पड़ेगा, ना कि डबल करना पड़ेगा. So let's get back to those questions. Again, we were somewhere here. Question number 8 part C मैंने solve कर दिया, I guess. Yeah, we are done with question number 8 part C. And question number 9 हमने किया था. Let me see. 9. Question number 9 we did. Okay, here's question number 9. Says that two loudspeakers S1 and S2. Again, let me pick this diagram. Something really, well defined. Yeah, that looks good. Okay. Okay, here's the diagram of question number 9. Something like this. All right. The question number 9, I think इसका कोई part नहीं है, ये पूरा question पूछा है, region है. Yeah, पूरा question. So question number 9 says that here's the diagram. M is the point distance. All the distances are given. It says that M point is M is a point distance 550 centimeter from both S1 and S2. Point P is 560. एक distance जो diagram पे mention नहीं है वो यहाँ हम लिख देते हैं, and that is 550. This distance is also 550 meter. That means the distance of M from S1 and S2 is same. अगर ये दोनों distances same हैं तो one thing is concluded that at this point the path difference will be 0 lambda. Then says that state and explain what happens to the loudness of the sound detected by microphone when the microphone is moved from point point M to point P. So now here there is constructive interference because the sources are out in phase. Now this distance is 580 and this distance is 560. When you divide it by the wavelength is given, that was 40 centimeter. So you divide 560 by 40 and here you divide 580 by 40, and you will get your answer in terms of lambda. इतने lambda बनते हैं. दोनों values को minus करें. Say this is D1 and this is D2. I think इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू D1 माइनस D2 करके आती है 0.5 लैम्डा. आई गेस अगर 0.5 लैम्डा आती है, दैट मीन्स दिस इज द सेंटर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस and this is the center of destructive interference. And when you are moving from point M to point P, the intensity will gradually be decreasing. So because it is moving from the constructive region to the destructive region, the value will be decreasing, the intensity will be decreasing. Referring to the diagram above, amplitude of wave emitted by S1 is now increased to 2A. अब वो कहता है कि पहले S1 और S2, मैं दोबारा इसको कॉपी करूँ डायग्राम को. Let me show you how it works. So here we go. जो फर्स्ट केस था उसमें एम्पलीट्यूड यहाँ पर, the amplitude of the wave emitted from here was A and it was A as well from here. So यहाँ जब constructive interference होगी तो amplitude A plus amplitude A you will get amplitude 2A. ये पहला केस है. And यहाँ जब ये दोनों waves receive होंगी तो amplitude A plus crest is coming on trough, so there will be nothing. So there is zero amplitude. But now there is a twist in the situation. This time there is amplitude 2A from here and there is amplitude A from here. This time when these waves arrive here, one wave is having an amplitude 2A, the other one has an amplitude A, the crest is appearing on crest, so the total amplitude will be 3A. If you remember, the principle of superposition said that the resultant amplitude is algebraic sum of individual amplitudes. Now coming to this part, what will happen here? Suppose यहाँ से हमारे पास पहुँचता है amplitude 2A from source S1 and it is going to overlap on the trough which is of amplitude minus A. पहले था plus A and minus A.
but now it is 2a and minus a, so the result will be a. So that means at this point, at point P, now there is 100, there is not the 100% destructive. The 100% destructive तो अभी भी है, but the point is कि दोनों एम्पलीट्यूड क्योंकि डिफरेंट है, सो आपके पास यहाँ भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी रिसीव हो। पहले पिछले केस में इस पॉइंट पर कोई इंटेंसिटी रिसीव नहीं हो रही थी, बिकॉज बोथ एम्पलीट्यूड्स वर सेम, डिफरेंट हो गए। सो दैट इज वाई, अगर आपको याद हो, हमने जब कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस लिखी थी तो हमने लिखा था इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न both sources must emit same amplitude, ताकि आपको पता तो चले कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव हुई है और यहाँ डिस्ट्रक्टिव हुई है, फॉर अ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन, फॉर अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन। बट इस केस में क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, 3a से एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते 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 2a तक जाएगा। What comes in my mind if I make a graph for this situation to have a better understanding, अगर ये वाला केस आ जाए तो इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ विल बी, से ये वैल्यू हमारे पास 3a है, लेट मी चेंज द कलर। सो ये अगर 3a है, it will fall till a, and then it will rise to 3a, then it will fall to 2a. So you know what is happening actually, it will be like this. At the destructive interference, even then you are getting some intensity, and at constructive interference you are getting even more intensity, though the intensities are same at all the constructive points. But the thing is, here the value will not get zero, there will be a difference. Then part 4 is the loudspeakers are now replaced with two monochromatic light sources, and state the reason why bright and dark fringes are not observed along the line PM. So loudspeaker की जगह पे हमने दो monochromatic light sources रख दिए हैं. You know, the distance between S1 and S2 is too big. Wave of frequencies f and speed are emitted by a stationary source of sound and observer. Okay, that was second question. So part 4 में वो कहता है अब हमने इसकी जगह पे S1 S2 की जगह पे लाइट सोर्सेज साउंड सोर्सेज की जगह पे हमने अब माइक्रोवेव रख दिया. The reason why you cannot see, dark and bright, the distance between S1 and S2 is too big. अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र नहीं आएगा, बिकॉज इफ यू रिमेंबर वी हैड दिस इक्वेशन x is equal to lambda d by a. That means x and a are inversely proportional to each other. If this distance is huge, then x will be minimum. और x मिनिमम होने का मतलब है कि डार्क और ब्राइट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, और अगर वो ओवरलैप कर जाएंगे तो आपको नज़र ही नहीं आएंगे कि डार्क कहाँ है और ब्राइट कहाँ. That was the question. Okay, question 9 हो गया. Question 1 part C and D part 3. कुलसुम का क्वेश्चन आया. One was easy. What? You asked for part 1? Part C. Sorry. Part C. If the above diagram shows the displacement of the chord T0, sketch on the diagram. 0.1 second later आपने बताना है. ये आपके पास वेव है. इस वेव का आपके पास टाइम पीरियड है. X axis पे there is distance, and that means if you have the time period, you have the frequency, and if you have the frequency and wavelength both, क्योंकि आपने B part में frequency निकाली है और A part 2 में wavelength calculate की है, so you can find speed. So now, for this case, for this question, for this question, you have frequency. This is question number 1. Frequency आपके पास है, wavelength आपके पास है, so speed भी आपके पास है, v is equal to f lambda से. अब वो कहता है कि इस ग्राफ के ऊपर आपने इसकी पोजीशन शो करनी है आफ्टर 0.1 सेकेंड. तो 0.1 सेकेंड के ऊपर आप डिस्टेंस निकालें. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड वट एवर द स्पीड, वट एवर द टाइम. आई थिंक मैंने जब ये क्वेश्चन कहीं कराया तो ये 30 सेंटीमीटर बनता है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना. सो अगर 30 सेंटीमीटर चलता है, इसका मतलब है कि हम इस डायग्राम को पिक करते हैं. सो here like this. Now the new wave will start from here. 30, this is 10, 20 and 30. यहाँ से start करें. New wave will be something like this. What a weird wave I have drawn.
will be getting a little weird. Okay, anyway. So this is a situation that आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और इसको पीछे एंड तक मिलाना है. So starting point पता लग गया तो आप आगे वे पता चलेगी. Try to understand this wave is progressing. This wave is moving from left to right. So 0.1 second के बाद ये जो point है, ये जो crest है, it should not be here. It should be somewhere here. This is the distance covered in 0.1 seconds. Quickly moving to the next part. कुलसुम ने अगला part पूछा था, part C and D part 3. D part 3 is here. What is the frequency of vibration of the fundamental or the first harmonic? Okay, length of the chord. Let me search out. Where is the length of the chord? On the diagram below is this one. Okay, rubber chord की ये length दी हुई है 2.5 meter. If they are 2.5 meter apart and say again I need every time I need to make a new canvas. Okay, so so when you are talking about the fundamental frequency, yeah, yeah. Here is A and here is B, the fundamental frequency. This is A and this is B. The fundamental frequency is formed like this. ये बात अब मैं कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि हमारे पास अगर लेंथ पता है 2.5 मीटर अपार्ट है, so that means lambda by 2 is equal to 2.5 meter, and hence wavelength is 2.5 into 2 and that will be 5. And frequency आपके पास निकल सकती है. स्पीड आपके पास आ चुकी है. पिछले पार्ट में हमने जब इससे पिछला पार्ट सॉल्व किया था, we first got the speed here. This was the speed. Use this speed. So you have this speed and yeah, you have the wavelength and hence you get the frequency. Next question. Question 9 हो गया, 1 हो गया. Not connected. Yeah, I know. ये मैं रिवाइज करता हूँ. ये मतलब एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. क्वेश्चन 8 पार्ट सी कर दिया. क्वेश्चन 9 भी मैंने पूरा कर दिया. क्वेश्चन 10 पार्ट बी, क्वेश्चन 10 मैंने पूरा कर दिया. क्वेश्चन 10 मैंने किया. लेट मी चेक. क्वेश्चन 10 मैंने पूरा सॉल्व किया. ओके, 12 के ऊपर मैं आता हूँ. वन पार्ट सी डी मैंने कर दिए. क्वेश्चन 13 बाद में करेंगे. सर क्वेश्चन 10, when you discuss part difference, isn't that case of integral value being constructive only for in-phase sources? How can you be sure that these sources are in phase? अलीशा, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं था कि ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, और ये भी मेंशन नहीं किया था कि आपने उसके रेफरेंस से लिखना है कि ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है. नो मैटर इफ दे आर कंस्ट्रक्टिव और दे आर डिस्ट्रक्टिव. चले अगर फॉर एग्जांपल दोनों सोर्सेज डिस्ट्रक्टिव भी हैं, यानी आई मीन दे आर आउट फेज के अंदर जो पॉइंट एम था या जो भी पॉइंट था हमारे पास जहाँ पर हमने कंसिडर किया कंस्ट्रक्टिव, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी. Even then, if you move along that line, there will be ups and downs in terms of intensity. कभी ज़्यादा हो रही होगी, कभी कम हो रही होगी. So you will be observing that thing. That is not the point. I mean, आपकी मर्जी है, आप उसको कंस्ट्रक्टिव के रेफरेंस से लिख लें या आप उसको डिस्ट्रक्टिव के रेफरेंस से लिख लें. So we are not. Any other question from first 10? Do you have any question from first 10 मैंने तकरीबन सारे सॉल्व किए. Can you explain question 10 part C? मरियम, मैंने question part 10 पूरा सॉल्व किया. इसका part C तो है ही. part C. Yeah,
see the question, it has only two parts. Doppler effect, Doppler effect we करते हैं. Okay, still have time. क्वेश्चन नंबर 10 अगले जो 20 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम पोस्ट योर प्रॉब्लम सी. Like we see question number 12 part 3, shouldn't it be because light travels with few obstacles? Let me read this question, शायद से मुझे नहीं याद इतने सारे क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं जा रहा हूँ. And the question number 12 is explain the meaning of term diffraction, that is the separation of light when it that is the spreading of light when it crosses a narrow aperture. Part B, describe how transverse waves with a plane wavefront may be produced in a ripple tank. वो experiment देना है जो आप बचपन से करते आए हैं. अच्छा, state how the wavelength of the wave could be shortened. आप frequency बढ़ा दें, wavelength कम हो जाएगी. C part 1 है, on figure you have to draw the pattern of the wave. So let's copy this one and let's paste it somewhere here. Here. Okay. So if I draw the pattern should look like this, because this is not a very narrow, maybe like this, something like this. And then your question is about question number 12 part 3. Let me take part 3. Part 1 तो हो गया. Describe how the pattern of wave fronts emerging from gap would change. वो तो हम sides कम कर देंगे. Part 3, state why under normal conditions light seems to travel in a straight line and does not appear to be diffracted. You know, in daily life, when we observe, we cannot observe interference pattern, we cannot observe diffraction pattern. लेकिन डायफ्रैक्शन पैटर्न तो इसलिए नज़र नहीं आता कि हमारे जो नॉर्मली ओपनिंग्स होती हैं, लाइट के सामने जो ओपनिंग आ रही होती है वो बहुत बहुत वाइड होती है. लाइक इफ देयर इज अ ओपनिंग लाइक दिस एंड देयर आर वेव फ्रंट्स कमिंग, लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट बिल्कुल सीधे गुजर जाते हैं. अगर आप ये ओपनिंग, लाइक इफ यू थिंक अबाउट द विंडो इन योर क्लासरूम और विंडो एट योर होम, तो विंडो साइज इतना बड़ा है कि वो बिल्कुल सीधे पास कर जाती है. अगर विंडो साइज बहुत छोटा होता तो शायद हमें सामने वॉल पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के रीजन्स नजर आने शुरू हो जाएं. यही वजह है कि जब हमने डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है इन फिजिक्स लैब्स, एक्चुअली देयर इज अ डार्क रूम, और डार्क रूम के अंदर यू नो वी पेंट द वॉल्स विद ब्लैक, वी पेंट द ब्लैक. तो हमें कोई और कलर नहीं नजर आता, हमें कहीं और से लाइट नहीं नजर आती, एंड हेंस वी आर ऑब्जर्व टू, एंड देन वी प्लेस अ वेरी स्मॉल स्लिट इन फ्रंट ऑफ लाइट. Then only in controlled situations you can see this property. Same is with interference. Interference में normally या तो distances बहुत ज़्यादा होते हैं S1 S2 के, या फिर वो जो आगे slit size है उसका वो बहुत बड़ा होता है. So sizes compatible होने ज़रूरी हैं ताकि आप ये pattern देख भी सकें. Shouldn't it be because light travels with you? नहीं, ये reason नहीं है, मैंने reason आपके सामने रख दी. क्वेश्चन नंबर सालार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट बी. Question number 13 part B says that figure 2.1 shows the trace produced on the screen of a cathode ray. Okay. The speed of sound in air is 330. Calculate the wavelength of the sound received by the microphone. So उसने adjust किया है. State and explain how the CRO would change the time based setting. ये उसका CRO का question है. So wavelength find करनी है. Speed आपके पास है. You know that one wave is formed in 1 millisecond per centimeter. So 1, 2, 3. I mean, count the number of divisions for the four divisions for one wave. Multiply by 4, so that is 4 milliseconds. So 4 millisecond अगर time period है, you can find frequency. और अगर frequency आपके पास आ जाती है, wavelength आपके पास मौजूद है पहले से, you can find speed of okay. जैसा कि आंसर कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 12 C part 3. क्वेश्चन नंबर 12 C part 3 मैंने आंसर कर दिया. क्वेश्चन नंबर 12 C part 3. Can you explain question number 10 part C again? Question
question number 10. There is question number 10. Part C नहीं है मैंने पहले भी सॉरी ये करो डॉपलर इफेक्ट बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी अगर आप वैसे मरियम अगर ये वीडियो सेफ रहेगी आप दोबारा वापस जाके सुनेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी बट मैं दोबारा फिर क्विकली बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 7 बाय व्हाट फैक्टर मैंने इसको सॉल्व किया आप वीडियो जब ये रिकॉर्डिंग खत्म होगी ये वीडियो अवेलेबल होगी इसको पीछे का जाके आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैंने पूरा इंडिविजुअली फार्मूला यूज़ किया है वो वाला ये f इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाई एम और मैंने अलग अलग फैक्टर्स के साथ सॉल्व किया है कि फ़र्क कैसे पड़ता है सो इंडिविजुअली तो उसको वापस जाके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 बी पार्ट 2 16 बी पार्ट 2 का 2 क्वेश्चन नंबर 15 बी पार्ट 2 लेट्स गो टू दैट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 बी पार्ट ओके अच्छा याद है जब हमने स्टेशनरी वेव किया था आप सारे जानते हैं हमने एक बड़ी बेसिक सी चीज़ पढ़ी थी हमने कहा था कि स्टेशनरी वेव में टाइम पीरियड इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन लाइक we calculate time period in progressive waves. In stationary waves, we calculate time period as like if this is string, what we be very clear about it, how to do it. So this is the string, and this string actually forms different patterns. Suppose there is one more note, and it is going to form second harmonic. So different positions of the strings are these ones. यह string इस position पे होती है या स्ट्रिंग इस पोजीशन पे होगी या स्ट्रिंग लोएस्ट पोजीशन पे होगी हमने जब ड्रॉ किया था तो हमने t/8 करके ड्रॉ किया था व्हाट आई मेंट मैंने बीच में ये भी ड्रॉ किया था जब मैंने उस वक्त डिस्कस की थी ये सारी चीज़ें क्लास में तो मैंने कहा था इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर फ्रॉम द टॉप एट दिस पॉइंट टाइम इज 0 it goes to the lowest point it returns back to the highest point so time for one oscillation is t. That means at the lowest point, that is t/2. And at this point, it is, because this is the half of the half, so that is t/4. And this is t/8. So what we do, we count it like this. We say that, okay, this is 0, this is 1t/8, this is 2t/8, 3t/8, 4t/8. Then it goes back, again appears at this position as you know 5t/8 then 6t/8 then 7t/8 and then 8t/8 so when it is 8t/8 that is actually t. Now coming to this question, it says that read this question carefully. It says that the shape of the string is shown at two different times. At time 0 it is labeled a यानी time 0 पे इसकी position horizontal है, it is straight, it's not forming any wave at time 0. तो ये अगर straight इसकी line है और सेकंड उसने ये कहा है कि अगली जो पोजीशन है एंड व्हेन एट t is equal to 0.2 seconds it is labeled as b. So look at the pattern of b. So next position is this one, right? So sorry, so this is at time 0 and this is at time 0.02 seconds 02 seconds. So अगले पार्ट में वो क्वेश्चन पूछता है ऑन फिगर this part. The string has its maximum displacement at 0.04 seconds. यानी 0.04 पे उसका maximum displacement है 0. On figure 4.21 and 4.24, draw the appearance of the waves at times 0.04, 0.06, 0.08 and 0.10. तो 0.02 के ऊपर यहाँ था सपोज अगर वो मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं ना दिस इज द सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमने शो कर दिया अगर हम ये वाली डायग्राम उठाते हैं एक let's copy it here
Nobody knows what. Oops. It doesn't work, there is a particular. Okay, so question is at 0.04 second the amplitude is maximum. मैं सिर्फ ये चेक कर लेता हूँ कि वो उसकी फॉर्मेशन कितने बॉक्सेस में हो रही है. 6 boxes. So this is the starting point. After 3 boxes is crest and after further 3 boxes there is drop. और amplitude जो उसने gain किया है that is about 1.5. So at 0.04 second it is somewhere here. It is like this. So the next part is ये मैं खुद कहा कि it has a maximum displacement. So 0.06 के ऊपर it will be at the center. It will be at the main position. क्योंकि ये हमें उसने पिछली डायग्राम में बता दिया था कि 0.02 सेकंड्स लगते हैं मीन से मैक्सिमम तक जाने. Now if I pick next two parts, इसको graph है. मेरा कर्सर कभी थोड़ा सा अजीब सा है. It again. Here we go. Let me paste it in new one. Okay. So अब हमने जो इससे पिछली डायग्राम में ड्रॉ किया था it was at the main position and now we are going to draw it the next position and the next position is again like this. Pre crest के लिए, pre trough के लिए. तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा. It will go to the lowest point. So this will be the next formation at 0.06 seconds. That is at 0.06 seconds. And at 1 at 0.08. 0.4, 0.06, 0.08. मैं बीच में 0.06 पे ड्रॉ किया था हमने. This was 0. This was 0.06. This was 0.04. This is 0.06. Next हमारे पास जो ग्राफ आया this is 0.08 and इसके बाद फिर दोबारा मेन पोजीशन आ जाएगी and at main position it is like this क्योंकि इसने वापस जाना है. So that is 1.0 seconds. That is the position. So आपने पूछा था question number 15 part B. I guess that was question number 15 part B. Question number 16 पे जाते हैं. Yeah, this was 15. Question number 16 part B. The figure shows at a given instant the shape of the stretched rope on which a stationary wave has been produced. अब stationary wave form हो रही है और आपने क्वेश्चन इसका पूछा है B part 2 का 2. The wave the phase difference. एक बात याद रखें जो stationary wave होती है उसका एक रूल है. Let me explain that part here. Whenever there is a stationary wave like this, formation कुछ ऐसे हुआ करते हैं stationary wave. Something like this. Within this part, within half wavelength, all points are in phase.
and these all are in phase 2. But if you randomly select any point from here or any point from here, the phase difference between, you know, this section and this section, their phase difference is pi radians or 180 degrees. The reason behind that is when this section is moving down, this whole section is moving up. So अगर आप यहाँ कोई भी दो पॉइंट्स उठा लेते हैं say y and z, the phase difference between them is zero. In phase means the phase difference is zero. So ये बात याद रखना. And okay. Question number 13A3. 13 minutes only. 13A3. State and describe with the aid of a diagram one wave phenomenon that applies to transverse waves. Okay. I mean एक phenomenon कई phenomenon है, reflection भी होती है, refraction भी होती है, but you know यहाँ पे उसने ऊपर longitudinal transverse का किया और उससे related फिर एक ही difference है जो सिर्फ only का word उसने mention किया. तो वो पोलराइजेशन है. पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की नहीं होती, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स की होती है. हमने ये बात क्लास में डिस्कस की थी और उसकी वजह ये थी कि जो प्लेन होता है जिसमें से वो पास करती हैं वो निकल जाती हैं ट्रांसवर्स के, उसमें से ट्रांसवर्स निकल सकती हैं, पोलराइजेशन नहीं निकलती, नहीं निकलती. सर यू डिड इट बट आई डिडंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी. मैंने कहा मरियम पीछे जाएंगे ना दोबारा देखेंगे. मैंने आपसे चले मुझे करना पड़ेगा देखें. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, दिस इज 8 पार्ट सी. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2L अंडर रूट टी बाई एम. जब हम स्टेशनरी वेव कर रहे थे तो उस वक्त हमने किया था. आप एक रूल याद रखें, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ. अलग अलग तीनों फैक्टर्स के साथ सॉल्व करें. यहाँ पे रखें f1/f2 L2/L1, यहाँ रखें f1/f2 अंडर रूट T1/T2 और यहाँ पे रखें f1/f2 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1. सब के लिए f2 की वैल्यू 2f रखें और नई यानी यहाँ पे आपको L2 फाइंड करना है, यहाँ पे T2 फाइंड करना है, यहाँ पे आपको M2 फाइंड करना है. फाइंड these values while keeping f2 as double of fundamental frequency every time, where f1 in all these cases is f0. ये वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास खुद ब खुद आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे. आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्टर कितना इंक्रीज इंडिविजुअली या डिक्रीज करें तो आपके पास आंसर आएगा. ओ माय गॉड फाद, ठहर जाएं अभी. 18B, क्वेश्चन नंबर 18B. अभी फर्स्ट 20 क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करें. अच्छा, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये तो नोट्स में लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट देख लेंगे. पार्ट बी. In an experiment to produce an observable interference pattern, two monochromatic sources S1 S2 are placed in the diagram like this. ये 0 है, ये P है. In order to produce a clear interference pattern on the screen, the light sources must be coherent. What is meant by coherence? Coherence means if the sources are in phase, they should remain in phase. If the sources are out phase, they should remain out phase. Or coherence actually means that the phase difference between must remain constant. It shouldn't change. अगर वो 0 डिग्री फेज डिफरेंस है तो 0 रहे, अगर वो 180 डिग्री फेज डिफरेंस है तो 180 रहे. Second part is the point P is the first position of minimum intensity, or from the central point of the maximum intensity. State in terms of lambda the magnitude of the path difference S1P S2P. ये बात हम पढ़ चुके हैं कि अगर सोर्सेज इन फेज हो हमारे पास, ये वाला केस है. याद रहे अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो कि ये इन फेज है या आउट फेज है तो कंसीडर इट एज इन फेज. सो हियर वी गो. अच्छा, सो वो कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पाथ डिफरेंस. तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर n की वैल्यू 0.5 लैम्डा है. सो इट इज 0 लैम्डा
and here it is 0.5 lambda, because if you remember we have done this sequence 0.0, 0.5, then 1, and then 1.5, and so on and so forth. चलता जाएगा. Here we go. Question number, same question part 3. आपने part 3 पूछा, आपने पूरा question पूछा नहीं. Let me check. नहीं, part B 2. ठीक. Okay. Question है, sir, what do the blocks indicate? Which blocks? अच्छा, वो जो blocks हैं, वो बाद ने answer दे दिया. Those are the units on the CR. Alicia, how do you find the time period of standing wave in question 15? Let's go to question number 15. ये मैंने किया था. मुझे इसमें टाइम पीरियड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी. अलीशा, उसके अंदर वजह ये थी कि उसने मुझे सिर्फ ये बता दिया था कि 0 पे ये ए पोजीशन पे है और 0.02 सेकंड पे ये टॉप पोजीशन पे है. अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं. आई मीन 0 से लेके और टॉप तक जाने में इसको अगर 0.04 सेकंड लगते हैं तो 0.02 सेकंड्स लगते हैं. 0.02 सेकंड एक पॉइंट पे लगेंगे, टॉप पे लगेंगे. 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 एंड देन 1.0. तो आपके पास 1 सेकंड, 1 इसका जो है वो सेकंड बनता है. तो टाइम पीरियड यहाँ फाइंड करना ही नहीं था, यहाँ तो आपने सिर्फ पोजीशन फाइंड किया. डायफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, पोलराइजेशन तो बाद में करेंगे. मैं पहले क्वेश्चंस यहाँ तक डिस्कस कर लूँ. अच्छा, तो वी आर डन टिल टू क्वेश्चन नंबर 20. नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस 20 से लेके 30 तक. एनी क्वेश्चन? Please post your questions from question number 20 to question number 30. तो अच्छा, I got it, Sanjay. एक second. Let me go to your read more about. Oh, बहुत सारे questions. Question number 12, 13. Okay. Question number 13, I guess मैंने किया. क्या यूसी ने पूछा था question number 13 साधारण. 13 कर दिया. So now we move to question number 20, part C. Can two transmitters produce coherent waves if exist to same frequency? Question number 20, part C. Why is it necessary to use a barrier with two slits rather than two separate transmitters? Look, हमने ये कोहेरेंस के लिए नहीं किया था. टू स्लिट्स से पहले एक हमने बैरियर इसलिए दिया था ताकि दोनों सोर्सेज इन फेज हों. दैट वाज डेलिबरेटली डन to make the sources in phase. I'm talking about question number 20, part C. That is the answer of your question, Shanzu. And then we have, why can't standing waves be transverse? No, they can be transverse. Who said they cannot be transverse? Like, I mean, a string के ऊपर जो wave produce होती है वो transverse ही होती है ना. So transverse waves stationary भी हो सकती हैं और longitudinal waves भी stationary हो सकती हैं. Like हमने जब वो air columns पढ़े थे closed pipes में और open pipes में, तो हमने standing waves discuss की हैं वहाँ. Then we have question number 27, part 3.1. Here we go. Question number 27. Okay. Figure shows the appearance of the trace on the CRO when both microphones are at the left end of the ruler. Let me see the ruler. Okay. That is the same distance from the loudspeaker. The time base is given, determined for the sound, the time period. The time base की values ने हमें दी हुई है 0.2 milliseconds per centimeter. Count the number of
डिविजन्स फॉर वन कंप्लीट वेव क्रेस्ट टू क्रेस्ट ले लें, वो बनते हैं दो डिविजन्स बनती हैं, तो 2 × 0.2 मिली सेकेंड विल गिव यू टाइम पीरियड हेंस फ्रीक्वेंसी। सेकेंड पार्ट में कहता है एज p is moved along the edge of the ruler, the amplitude of trace is seen to decrease then increase. Why it is happening so? Why the amplitude is a maximum? देखें जब ये सामने, अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है, द स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड इन एयर। सो हमें नहीं, उसने शो नहीं किया कि वो दूसरी साइड पे रिफ्लेक्टर है या नहीं, बट इफ द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दैट मीन्स द स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड, because P and Q, let me see P and Q. Second part, why the amplitude? आपने ये part पूछा था। Question number 27, part 3, point number 1. Part 2. The first minimum of the amplitude occurs when P is at 6.8 centimeter from the left hand of the ruler. Determine the wavelength. So हमारे पास wavelength हमने निकालनी है. We have the frequency, and the first minimum is formed at a distance of 6.8 centimeter. यानी हमारे पास जो एंटी नोड है वो फॉर्म हो रहा है 6.8 सेंटीमीटर दूर. So if I can imagine about the situation is like this. The first minimum after a maximum is formed at a distance of 6.8 centimeter, and that is lambda by 4. Hence you can find the value of this. आपके पास value है. So next is question number 35 part B. 30 तक मैं भी question लेंगे. आखिरी आपने कुछ और पूछा, sir, could you explain the depth of water? What the depth of water does to the frequency and wavelength of a wave? मुझे आप specific question बताएंगे. Depth से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Anyway, go back to the question. 30 से ऊपर मैं अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा. क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपसे बताएंगे. सर व्हेन विल यू डू डायफ्लेक्शन रेटिंग? मेरा ख्याल है यूनस हम अगले सेशन में कर सकेंगे, बिकॉज यू नो आई वांट टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. ओके, what question number 20 part C. Here is question number go to question number 20 part C मैंने explain कर दिया. अच्छा, question number 17 part A. फिर आ गया. State the meaning of plane polarization. ये वही definition है polarization की है. मनाल इसके अंदर हमने पूछा था ना, polarization define किया था that this is the phenomenon in which the wave is forced to pass through a plane. फिर फाद का क्वेश्चन है, in this case superposition is taking place. 27B part 1. 27B part 1 superposition. Let me see the question. 27B part. क्या सुपरपोजिशन हो रही है? ऑब्वियसली कंटिन्यूस सुपरपोजिशन हो रही है जिसकी वजह से स्टेशनरी वेव फॉर्म. सो इट्स 8:05. 10 मिनट और रुकते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 40 तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस, क्योंकि आज हमारा सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ. गो फॉर 10 मोर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 30 to 40. शांति, मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर वापस आ रहा हूँ. यू आस्क क्वेश्चन नंबर 35 पार्ट बी. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 35 पार्ट बी. Meanwhile, if you have questions from question 30 to question 40, do let me know. मैं अभी सॉल्व कर दूँ. 35
Part B. Okay. Figure shows the arrangement of for viewing a visible interference pattern on screen S1, S2 given a dark room में हमने ये perform किया. In order to produce a clear interference pattern on the screen, the wave sources must be coherent. Coherent की definition हमें पता है. Second part is explain how the arrangement shown ensures that the slits S1 and S2 act as coherent light sources. देखें दोनों सोर्सेज इन फेज हैं और ये हमेशा इन फेज रहेंगे बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेज फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू S1 एंड S2 इज नॉट चेंजिंग. कोहेरेंस सिर्फ उस वक्त खराब होगी जब या तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए या डिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट चेंज हो. दैट इज वाई मैंने पहले भी कहा था ना कि हम इस पॉइंट को इसलिए रखते हैं ताकि डिस्टेंस कांस्टेंट रहे. No matter you make it in phase or out phase, but if it is in phase, it will remain in phase. If it is out phase, it will remain out phase. So because the distance is not changing, that is why it is assured that it's not going to change. The next part is the distance between S1 and S2 is 0.6 millimeter. Okay, let me write this value. The value of A is 0.6 millimeter. And when the screen is placed 1.8 meter from the slits, capital D is given. That is 1.8 meter. The distance between neighboring minima, यानी x की वैल्यू जो है वो दी हुई है 2.0 millimeter. You need to find out wavelength. So lambda निकल सकता है वो जो फॉर्मूला था ना x is equal to lambda d by a. So lambda d by a. So hence you had to find out wavelength. So that is x into a divided by d, and hence you get to that. State and explain how the interference pattern changes when light of a shorter wavelength is used. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं. अगर आप वेवलेंथ कम करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कम हो जाएगी. अगर आपको याद हो हमने एक पूरा टेबल किया था और मैंने इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर ये सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू wavelength, x is directly proportional to d, x is inversely proportional to a. So please remember the properties that we had in class. एक मैंने short table आपको आपके सामने रखा. So that was question number 35. Sorry, 27 part B. But 35 हमने कर लिया. Why would the color change? Question number 35. कहाँ लिखा color? Okay, state and explain how the interference pattern would change. So obviously जो wavelength आपने change की हो, मुझे ये नहीं समझ आ रही 35 B part का 5 part कहाँ कहता है color? State and explain how the interference pattern changes when light of a shorter wavelength is used. कलर चेंज हो या शॉर्टर वेवलेंथ यूज हो मैंने आपके सामने रखा है कि साथ ही शॉर्टर वेवलेंथ के साथ एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है. तो एक्स एंड वेवलेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. So the fringes will get closer to each other. Then we have question number 35, part B, part 5. Question in diffraction, when we say the greater the wavelength, the greater the diffraction, do we mean this relative to the slit? No, we are keeping the slit constant. Like आपके पास एक slit width है, उसके ऊपर आप 500 नैनोमीटर की wavelength देते हैं और उसी slit width पे आप 700 नैनोमीटर की wavelength देते हैं. In case of 700 nanometer, there will be more diffraction. So keeping the slit width constant, if you increase the wavelength, there will be more diffraction. Then we move to the next questions. Doctor, sorry, नहीं करा सका इस दफा सेशन लंबा हो गया. क्वेश्चन नंबर 35 बी पार्ट 2 मैंने अभी किया है. 35 मैंने कर दिया. उसके बाद 37 बी पार्ट 2. 37 से पहले देखेंगे यार क्वेश्चन है. आइला अब सेशन बस खत्म होने वाला.
अंदर लिखा होगा कलर, आई डोंट केयर अबाउट मार्किंग स्कीम, लिखा होगा कलर उसके अंदर, बट वी अंडरस्टैंड दैट वेवलेंथ, whenever wavelength changes it is automatically understood that the color changes. But the question was how it affects, the formation of interference pattern on the screen. So we remain very particular about it. Question number 30 part B. We have 5 more minutes और उसके बाद हम सेशन खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर हम अगले सेशन की तरफ बाकी क्वेश्चन कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 30. 30, 30, 30. ये question number 30. Part B. The length of the tube is 0.6 meter. देखें इसके अंदर उसने शो किए हुए नोडल पॉइंट्स. So the tube column is, draw the arrows. आप ये वाली डायग्राम उठा ले, तो मैंने एरोस बनाए थे क्लास में, अगर आपको याद हो. Biggest problem for me is when you people, get absent during this thing. तो जब आपने इसके ऊपर एरोस शो करने हैं, तो एरोस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नोड्स. लाइक ये नोड से हम एरो बढ़ाते जाएंगे, एरो लेंथ, और इधर से भी एरो लेंथ बढ़ाते जाएंगे. इट विल बी लाइक दिस. एंड देन इसी तरह आप एरो लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे. ओके, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड. सो वेवलेंथ जो हमारे पास आ रही है, देयर आर 3 नोट्स फॉर्म. स्टैंडिंग वेव कैन बी प्रोड्यूस इन द एयर. शुरू से रीड कर रहा हूँ. The length of the tube is 0.36 meter. The air column in the tube is sounding its lowest frequency. Okay, lowest frequency पे. अगर ये lowest frequency पे है, तो इसका मतलब है wavelength जो form हो रही है वो, यानी fundamental wavelength form हो रही है. So in case of the lowest frequency, here's the 5. This is node, and this is antinode. This will be the formation, and that is lambda by 4. So lambda by 4 is equal to length, and hence lambda is equal to 4L. Values आपके पास होंगी, आप नोट करके calculate करें. And then calculate the wavelength. We got it. The speed of the sound is given, hence frequency. Wavelength हमारे पास है, speed हमारे पास है, frequency हम निकाल लें. Determine the value of the lowest frequency of the note produced in the tube of this length, but open at both ends. Okay, fine. इसी लेंथ की है लेकिन दोनों साइड पे ओपन है, और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. दैट मीन्स देयर इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. नोड इज हियर, and here is the first formation, something like this, and that is total is lambda by 2, and in that case lambda by 2 is equal to length of the pipe. Length of the pipe वही रही, lambda different हो गया, that is double of the length, and hence frequency is v by 2l, और आपके पास वैल्यू है. Okay, so 35, 37, 37 B part 3, 8 seconds. 37, 38, 35, 37. Figure 4.1 shows a given instant the surface is given. Okay, ये सारी values दी हुई हैं. आपने पूछा question 35 B2. Let me look at B2. Draw arrows to show the direction in which the particles at Q and S are moving during this short time. So progressive wave, Q के ऊपर direction of the particle upward होगी, और S पे direction of the particle downward होगी. So you draw it like this. Here the particle is directed upwards, and here the particle is directed downwards. So answer that part. So I think बाकी हम next session में बाकी हम 30 to 40 से start करेंगे, and we will finish all the worksheets, don't worry. And अगले सेशन में मैं क्वेश्चंस को रिवाइज भी करूँगा. डू मी अ फेवर, आप लोग जो ये काम करते हैं ना कि पूरा पूरा टॉपिक रिवाइज कर दो. देखें अगर आप एब्सेंट रहे थे तो वो एक अलग चीज़ है, बट द थिंग इज इफ यू वर इन द क्लास एंड यू हैव द नोट्स एंड एवरीथिंग,
डू मी दिस फेवर, आप उनको उनको कहीं से पढ़ें, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो टॉपिक हमने पूरा महीना लगा के पढ़ा, उसके बाद आप उसमें से कहें कि भाई ये वाला टॉपिक रिवाइज कर दो। आई डोंट हैव एनी इशू इन रिवाइजिंग, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको उसी टाइम के अंदर अगर हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो हम क्लास में नहीं कर पाते, या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लाइक डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, डू मी दैट फेवर कि हम वो वाली चीज़ कर सकेंगे। So next time we will be discussing from question number 30 onwards, and thank you very much for your time. See you tomorrow. Take care.